रहीम, आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। सो टुडे बच्चों हम डिस्कस करेंगे आपके सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के पेपर का। इस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस एवरी चैप्टर के एंड अलॉन्ग विद दैट लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपकी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ध्यान से सुने एंड यही चीज़ें अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, बिकॉज ये आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस है बच्चों। सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम्स जो आपके इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों, आप इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स अपने इंक्रीज़ कर सकते हैं एंड मार्किंग भी लीनियंट होती है, नॉट स्ट्रिक्ट एज फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस आएंगे। इन यूनिट 1 वी हैव डिस्क्राइब डेटा मैनिपुलेशन, व्हाट इज़ फील्ड, प्रोग्राम फाइल विद एग्जाम्पल। इसमें आपने एग्जाम्पल भी कोड करनी है, जिसमें वो एग्जाम्पल का लिखें, जिसमें वो डिफाइन बोल रहे हैं उसमें भी लिख दें, एक अच्छा इमेज आएगा। डिफाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डिफरेंशिएट आपने लाइन लगा के डेटा एक साइड पे लिखना है, इन्फॉर्मेशन एक साइड पे, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स शुड बी देयर इन अ डिफरेंस क्वेश्चन। आगे डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग, डिफाइन redundancy, नेम 2 फीचर्स ऑफ DBMS. In Unit 2 we have what are the properties of relation, define indexes, define foreign keys, define key, list different types of keys भी। आगे आपके define data administration, define table and relation, how a relation is formed in database, what is an entity in an ERD, who is the user or end user, what is the purpose of using views. In chapter 3 you have define attribute, data and modeling, define the purpose of feasibility study, and what is ER diagram. In chapter 4 you are having transitive dependency, define identity, define integrity, synonyms, database integrity, and partial dependency. In chapter 5 the important questions are RDBMS, differentiate between form and report, database wizard, simple and database, how query is written, list some advantages of IDE, use of MS Access, reports, and list the parts of application windows in MS Access. If you like the video, do like and subscribe and show your love and support. And जो भी आप लोगों के गेस्ट पेपर्स आने लगे हैं वाइल अपलोड, आप बिफोर टाइम उन्हें तैयार कर लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए एंड आप इस गोल्डन चांस को अवेल करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ कर सकें। In Unit 6 we have primary keys, what is the use of data sheet views in MS Access, cardinality of relation, degree of relation, write down 2 table wise available in Access. In Unit 7 we have subform, uses of columnar form, purpose of control naming convention, syntax of message box, what are methods in VB, property window, code window, purpose of timer control, differentiate between key press and key up events, events of mouse and events of keyboard. In Unit 8 you have define programming language, case sensitive in C language, preprocessor directive, programmer, differentiate between logical errors and syntax error, header files को भी आपने define करना है, compiler and assembler, differentiate between source course and object course, difference के सवाल are very important, you need to learn them by heart, delimiters, run-timer errors, structured programming language, visual basic, differentiate between visual programming and event-driven programming language, what is net function, what is VBA. एक और आप लोगों के लिए हिंट है, अगर आपको वो टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता, अब आपका जो अभी जो पेपर पैटर्न है उसमें आप कोई भी चैप्टर चॉइस पे नहीं छोड़ सकते अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। बट अगर आपको फिर भी उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी आता है, अगर आपको वो सवाल नहीं आ रहा बट आपको कुछ भी रेलेवेंट उसके आगे पीछे कुछ भी आता है, उससे डिफ़ाइन करना आता है, उसका आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, डू राइट इट डाउन। खाली नहीं छोड़ के आनी है आपने, वो डोंट लीव द स्पेस ब्लैंक, आपने कुछ भी उसमें लिख के आना है रेलेवेंट टू दैट टॉपिक, ताकि आपको ज़ीरो ना मिले, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह आपके मार्क्स इम्प्रूव हो सकते हैं। आगे आपके यूनिट 9 में है डिफाइन identifiers with an example, differentiate between declaring and define a variable, variables and two आपने define करना variables and 2 rules for naming variables. आगे uses of assignment statement, operator precedent, define constant, list different types of constants, character constant, keywords, concentration operators.
तो ये आपने सारी डिफाइन करनी है। यूनिट 10 में आपके पास है स्टैंडर्ड इनपुट, एस्केप सीक्वेंस, uses of scan function, control SCR function, predict the output and trace the errors in the following code। तो ये आपको कोड दिया जाएगा, उसमें आपने ट्रेस करना है एरर। लिस्ट सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर इनपुट। Coming up to unit 11, we have control structure and selection structure। 12 we have control structure and selection structure is important। फिर आगे इसमें write syntax of if else statement, why break system is used in switch structure and switch system is important chapter 11 से। for short questions 12 चैप्टर आगे आपको लॉन्ग भी बताए जाएंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो आपने लाजमी करने हैं। चैप्टर 12 में से आपके पास while लूप, सेंटिनल कंट्रोल लूप, सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, syntax of do while loop, what is iteration। आगे unit 13 you have define function and some benefits of using functions, local variables and its scope, compare local variables and global variables, functions cell, actual parameter, built-in functions, lifetime of local variables, function definition and function declaration, prototyping। तो ये सारा कुछ important है। आगे है compare binary and text stream, binary system, text file, file close, describe project file in VB, project explorer window, differentiate between method and property। आपके पास ये आगे वोकेशंस आ गई हैं। पब्लिक हॉलीडे फॉर तकरीबन 5 आपकी बनी है, इसमें आप अच्छी तरह तैयारी करें, अच्छी तरह पेपर दे के आएँ एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताएंगे जो आपने लाजमी तैयार करने हैं। आप टिल दैट टाइम प्रिपेयर दी शॉर्ट क्वेश्चंस बाय हार्ट एंड क्लियर योर कंसेप्ट्स रेलिवेंट टू दीज टॉपिक्स। जो टॉपिक्स हैं उसका रेलिवेंट कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।